Mommytrack Daddy Whispers Podcast is now called Birth Agni Podcast. Hello, listeners. How have you been? I have a good news to share with you. Divi turned 2 this month, and one of the first thoughts I had was, damn, she's gonna have to start school. And then I realized that may not happen because we have an extended pandemic into the next year. I kind of felt sad and confused. And then I remember this one friend of me, an incredible mom who's with me today, who I follow on Instagram, who was in a similar situation earlier this year. And she started her daughter's school in the pandemic. So I got in touch with her and she agreed to help me by sharing her experience. She'll tell us today about how she enrolled her daughter into the school, how she felt at that point in time, how she sailed through, and we would welcome her. But before, an intro. Welcome to Mommytrack Daddy Whispers, a podcast about women, postpartum issues, and parenting. We discuss parenting without subjecting it to motherhood or fatherhood. We are a bi weekly podcast where the aim is to share our experiences and grow into a community wherein we mutually uplift each other. My name is Divya, and let's bring on Maitri today. She's a mom blogger, a podcaster, and so much more. Maitri, welcome to Mommytrack Daddy Whispers Podcast. Thank you for coming on board. Thank you so much, Divya. I'm also thrilled to be here on your podcast. हाँ जी मैत्री सो इधाया नाम है ना आपकी बेटी का Yes. एंड व्हेन डिड शी स्टार्ट स्कूल So she had to start in April this year, and we got her admitted in January itself. We paid her अच्छा fee and everything, and we हाँ were जी very excited. She was very excited at that point of time because she saw her school. She was very happy, and then suddenly all of this happened, and her first day of school started with online schooling. hmm. And how did you feel when you came to know कि अभी स्कूल नहीं जा सकते I was shattered. Seriously. Okay. I Hmm. was, waiting for it. I was waiting for that kind of me time that I will get 4 hours all by myself. I will do whatever I want. I Hmm. will work on my हाँ. podcast, my blog, or whatever I want. So, Hmm. I was like, no, that's not gonna happen. I will have Hmm. to teach her. I don't know how will they do it. So yeah, Right. that was a curveball that we got. But yeah. Hmm. Because I think abhi bhi just say I'm thinking of enrolling Divi into a school Mm. sometime from now. But when I thought about it, I was like, damn, मतलब नहीं है अभी school तो नहीं जाएगी. Mm. And we all have kind of our own imagination of what we'll do in that spare time, and they're gonna learn so many things. हाँ, वही सब. तो how did Idhaya take it? Was she happy कि अब नहीं जाना है, or was she again? No, she was sad then. Abhi, she is very happy now. She has announced कि when even Corona is gone and everything, she will not go to Hmm. school. मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा. Oh, मेरी वैन आएगी तो भी मैं नहीं जाऊँगा. मैं oh, पढ़ाई नहीं करूँगा because now she knows कि hmm, स्कूल में पढ़ाई होती है. Initially, she used to be right. like Peppa Pig में देख लिया मैडम गज़ेल होती हैं and I don't know Hmm. what her dreams were. Now she is like अच्छा स्कूल में ये लिखना पड़ता है. तो हाँ, she is reluctant, but at that point of time she was not very excited about it कि मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने को मिल रहा है, मम्मा कब जाऊँगा स्कूल में, मेरी टीचर मुझे कैसे मिल पाएगी. तो but hmm. obviously she has adjusted. They're easy to adapt. Hmm. But then, how did you prepare her for that first class, maybe? Okay, so this is interesting because her first class was not live online class. Her school actually does not do live online classes a lot. They send Okay. pre-recorded videos, like their teachers record videos, and then they Okay. send it. The videos are not long; they are like 5 to 7 minute long videos. So, which is very good because she does not get a lot of screen time in the name of school because we don't like our Exactly. kids getting screen time or school के नाम पे they have to sit for 2 3 hours in front of a laptop screen. That was my question हाँ to you. कि, हाँ, मतलब screen time is the most obvious thing that a mother would be worried or a father would be worried of. हाँ कि
इतने छोटे बच्चे को? नहीं दिखाना चाहते हम लोग, और बट स्कूल के नाम पे हमें दिखाना पड़ता है, तो दे डू दैट। बट अभी क्या हुआ है कि पेरेंट्स स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग कि वी वांट ऑनलाइन क्लासेस, तो इनिशियली दे स्टार्टेड विद वन क्लास एवरी 10 days, just to kind of test it. Now they take class every day. It is just a 20-minute class. It's not like a very hour long Mm, even. But right. again, it's not mandatory. So Idaya does not sit there. They still send the videos. Okay. So Idaya watches the videos and that's it. Mhm. Because I'm like, कि ठीक है अभी जैसे चल रहा था, let's keep at it. Why spoil our Mm, little routine? And yes, she's also mhm. enrolled in a phonics class, which happens thrice a week. So that is also a 40-minute class. So usme yes, she has to Okay. sit, but I think that is a lot of fun, or she's learning something different. और ज़्यादा है भी नहीं, Mm. as I told कि thrice a week है, तो yeah, she's enjoying that a lot. And what is a phonics class? Phonics में they are simply telling her the sounds of different words, like how to pronounce. Acha, It okay. will help her in her pronunciation and everything. Oh, lovely. Because Mhm. I wanted to ask you, were you apprehensive of the online classes at first? कि interaction कैसा होगा? Because 2 साल, I'm assuming she must have been 2.5 years old. Mhm. Jabhi, she must have started school. So for a 2.5 year old, we aren't very sure because we think कि school में जब तक physical presence नहीं है, they don't play because that's also important. Yeah. That's also an important part of learning. Mm. So were you apprehensive of the online classes earlier on? Yes, actually socializing वाला part important होता है. We live in a society, a residential society complex है, तो she gets to meet with her friends. अभी नहीं हो पाता obviously, Mhm. but हाँ. in social sense अगर देखा जाए तो she has been playing with kids her age, older than her age, but school की बात अलग होती है. She was Mm. actually exactly 3 when she was starting school, because she turned Okay. 3 in March and school was to start Okay. in April. तो Got it. वो बोलने भी लगी थी, बात करने लगी थी. She had a Mm. good understanding of things also. बट या सोशलाइजिंग के लिए भी आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्कूल, बट जब ये आया कि अभी स्कूल में होना ही नहीं है, तो और अभी तो बिल्कुल ही हम लोग सोशल से कट गए, बिकॉज किसी भी तरीके हाँ. से आप सोशलाइज नहीं कर सकते हो. और मैंने ये भी देखा कि 20 minutes की ऑनलाइन क्लास में देयर इज जो अभी उनका स्कूल ले रहा है, देयर इज नो रियल स्कोप फॉर सोशलाइजिंग. ओनली दे टॉक ओनली टू टीचर्स, और जस्ट Mm. थोड़ी बहुत पढ़ाई या जो भी हुआ. तो सोशलाइजिंग Mm. इसमें नहीं हो पाता है ऑब्वियसली. इसके लिए मे बी दे कैन डू समथिंग कि बच्चे एक दूसरे को जाने, बट आई एम नॉट Mm. श्योर टू श्योर अबाउट इट कि वो लाइव एक दूसरे से हाय हेलो करके हाउ मच विल दे डू. Young children are shy to interact like that too. She is anything but shy. Ah. Because I have seen her Yeah. in a phonics class. She is the only girl, actually only student who dances while when her teacher plays rhymes. Oh, that's so lovely. I can imagine. Yeah. Because Divi also loves dancing. Mhm. कुछ भी हो बस चला दो, गाना चला दो और dance करा दो. So okay, that will be, if I have to like put it in a statement, that will be one drawback Mhm. of online schooling. हाँ, नहीं सीरियसली, बिकॉज़ हम जो सेफ्टी का एस्पेक्ट आता है ना बच्चों की, उस तरीके से मुझे बहुत रिलैक्स्ड फ़ील होता है कि आई एम नॉट वरीड अबाउट हर कि वो मुझसे दूर Hmm. है, कहाँ है, क्या कर रही है. बट अदर दैन दैट आई डोंट रियली सी मच ऑफ pro in Hmm. online schooling. Obviously, we nobody wants this happening Hmm. anyway. Of course. Yeah. Of course. It breaks our heart कि बच्चे जा रहे हैं स्कूल, because मैं भी सोचती हूँ कि जब डालूंगी तो कैसे होगा, स्कूल्स कैसे होंगे. हम सब गए हैं स्कूल, बट फिर भी एक एक शुरुआत में यू स्कैर्ड ऑफ. हाँ, हाँ. मैत्री, जो स्कूल में ऐसे हम आप जैसे बता रहे हो कि पढ़ाते हैं, वीडियोस भेजते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम डू दे फॉलो, एंड उससे इज द लर्निंग दैट ग्रेट जिस तरीके से दे हैंडलिंग थिंग्स? नहीं, स्कूल वाली बात तो नहीं आ सकती. दे सेंड सीबीएसई का आई थिंक पैटर्न होता है जो भी वो फॉलो करते हैं, तो दे सेंड राइटिंग इंस्ट्रक्शन कि आपको ये पर्टिकुलर लेटर ऐसे फॉर्म करना है. दे सेंड एक्टिविटी वीडियोस, स्टोरी वीडियोस, राइम वीडियोस. दे सेंड एवरीथिंग. लाइक एक ही दिन में आपको बहुत सारा नहीं भेजेंगे, एक दिन में दे सेंड मे बी 2 वीडियोस.
तो थोड़ा-थोड़ा करके ही सिखाते हैं और बहुत प्रेशर नहीं है ना, असेसमेंट भी नहीं होता है इन लोगों का कि विच इज़ गुड। हाँ, मतलब दे जस्ट सेड कि असेसमेंट होगा जिसको दे कॉल राइटिंग फन। उसमें बस बच्चों से बोल दिया कि यू राइट दिस एंड दे वर डन। लाइक देयर आर हुँ, नो मार्क्स इन्वॉल्व्ड, ऐसा कुछ हुँ, भी नहीं है। तो बट अगर लर्निंग की पर से बात करें तो शी इज़ जस्ट लर्निंग टू राइट, क्योंकि वो देख लेती है वीडियोज़ और वो थोड़ा-सा बनाना सीख गई है। और हुँ, ऑनेस्टली आई एज़ अ पर्सन कैन नॉट गिव टाइम फॉर एक्टिविटीज़ जो भी उसके स्कूल से आती है। हुँ, मेरे पास टाइम नहीं है हुँ, कि मैं उसको बिठा के ये सारी मेसी एक्टिविटीज़ कराऊँ कि डिप योर हुँ, फिंगर्स इन पेंट या हुँ, फिर मड से करूँ, अ, सॉइल जो गॉट भी है इट। व्हाटएवर ये सब कराऊँ। तो मैं नहीं करा पाती हुँ, उसको। अगर वो स्कूल में होती हुँ, तो ये सारा काम स्कूल में हो रहा होता। हाँ, तो ओके। विद मी शी इज़ लर्निंग मोस्टली द बोरिंग पार्ट ऑफ स्कूल, जो लिखने वाला। हाँ। दैट टू आई एम हुँ, नॉट प्रेशरिंग हर, जितना उसका मन होता है वो लिख लेती है, नहीं लिखना है मत लिखो, सीख जाएगी। yeah, but that's a good way to go about it, and I totally understand वो वाला हुँ, part कि activities बहुत सारे parents I think not just Idaya is like 3, she must be around 3 or more हाँ। now. हुँ, हुँ। तो जो बड़े बच्चे भी हैं उनकी एक्टिविटीज से पेरेंट्स आर क्वाइट अनहैप्पी। हाँ, मतलब तो मैं ये बोलूँगी कि इनका स्कूल इज़ वेल नोन फॉर दिस कि दे डोंट गिव यू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। हम्म तो अभी भी the activities are very simple and like maybe there are 2 activities a week. It's not a lot but I as a person I just can't हम्म do it, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। I know kids who हाँ do it and they send their pictures कि देखो मैंने किया है। मैं उसको हम्म कभी-कभी occasionally करवाई है मैंने। अब अभी तो I don't think मैंने उसको बहुत टाइम से कोई भी एक्टिविटी करवाई है। but there is the good thing is the school is not pressurizing you to हाँ, बस कोई do प्रेशर all of नहीं है those। बट आई नो कि हम्म दिस इज़ वन थिंग व्हिच दाया माइट बी लैकिंग, क्योंकि दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ हम्म लर्निंग, उससे भी कुछ सीखते ही हैं वो हम्म लोग। मैं उसको नहीं करवा रही हूँ। आई हम्म। नो कि मुझे करवाना चाहिए बट मैं नहीं करवा रही हूँ। बट आई आल्सो नो कि वो घर में रहकर भी बहुत सारी चीज़ें सीख रही है। हाँ, एग्ज़ैक्टली मैं अभी यही पूछना चाह रही थी आपसे कि जो इन अ वे व्हाट आई गैदर फ्रॉम आपने जो कुछ भी बताया है हुँ। कि एक तरीके से होम स्कूलिंग ही हो रही है। So you might be, teaching her a lot of other things. She's involved in the household, हुँ। and morals और बहुत सारी और भी चीज़ें आप सिखा रहे होगे तो। हाँ, सो हुँ, आई फ़ील कि घर में रहकर भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। अब जैसे वो हमारे साथ पूरे दिन रहते हैं तो फिर शी इज़ इन्वॉल्व्ड इन हाउसहोल्ड थोड़ा बहुत, कि फ्रिज से सामान हुँ, निकाल लो या ये सामान सॉर्ट करके रख दो, अपनी बुक्स ठीक हाँ, से रख दो या हाँ, घर को थोड़ा ऑर्गनाइज़ करने में मेरी हेल्प कर दो। तो इट्स नॉट लाइक हुँ, शी इज़ द मोस्ट कोऑपरेटिव पर्सन बट शी एन्जॉयज़ इट और उसको थोड़ा लगता है कि हाँ, मेरी वैल्यू है। घर का अगर उसको कोई छोटा-सा भी काम बोल दो ना तो शी गेट्स वेरी एक्साइटेड, अच्छा मम्मा ने मुझसे ये हाँ, करने को बोला है। तो ठीक है, इस तरीके से शी इज़ लर्निंग समथिंग और घर में रहकर वो थोड़ा बोर्डम को फाइट करना और आई थिंक इंडिपेंडेंटली खेलना सीख रही है। दैट्स अ बिग टेक अवे। हुँ, हुँ। आई थिंक वही जो अभी हम बात कर रहे थे शुरुआत में कि होम स्कूलिंग, हुँ, इन अ वे चिल्ड्रन आर अंडर होम स्कूल, तो वो खुद ही सीख रहे हैं, चीज़ें घर से सीख रहे हैं। और जैसे आपने बताया कि वो घर की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो शायद स्कूल जाके नहीं सीखते। तो हुँ। आई थिंक इट्स अ बैलेंस समवेयर डाउन द लाइन। तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स लूँ घर पे रहकर बच्चे, तो दे आर ईटिंग वेल, वो अच्छे से खा पी रहे हैं, दे आर विद देयर पेरेंट्स, दे आर अंडर सिक्योर in a secure environment, या and parents are less worried. हुँ, हुँ। You and I are less worried. और हाँ, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, they're getting independent. हाँ, हाँ, हमारी सैनिटी ज़रूर थोड़ी-सी खतरे में है बट अदर देन दैट हाँ, आवर पूरा किड्स आर दिन। परफेक्टली फाइन। हाँ। हाँ, हाँ, आई थिंक वो अभी 1 साल तो एज़ वी सी 1 साल तो अभी रहेगा। हाँ, लेट्स सी नेक्स्ट ईयर कब स्कूल स्टार्ट होता है। होता भी है नेक्स्ट ईयर भी कि नहीं होता है, वी डोंट नो। हाँ, एंड जभी भी स्कूल स्टार्ट होएगा तो डू यू थिंक आपको विधायक को थोड़ा समझाना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा?
कि Yeah. नहीं स्कूल जाना है और खुद को भी मनाना पड़ेगा। या बिकॉज़ मैंने पहले बोला भी था कि आई वाज़ शैटर्ड जब उसका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था, बट हुँ, जब मैं बाद में सोचती हूँ ना, व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ 1 साल और रहने को मिल गया, उसकी ग्रोथ का एक नया एस्पेक्ट देखने को मिल गया, बिकॉज़ शी हैज़ चेंज्ड सो मच इन दिस ईयर। अगर वो स्कूल हुँ, जाती होती ना, तो मैं सारा क्रेडिट स्कूल को दे देती। यो जो जितना वो इंडिपेंडेंट हो गई है, या जितनी नई चीज़ें सीखी हाँ, है, जितना अच्छे से वो बोलने लगी है, क्लियर बोलने लगी है, बहुत सारी चीज़ें सीख हाँ, रही है। तो ये सारा क्रेडिट अभी उसको अनस्कूलिंग, होम स्कूलिंग जो भी बोल लो, मतलब घर पे हुँ, जा रहा है, एंड आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। तो मुझे अच्छा भी लगता है ये सोचकर कि हाँ, वो हुँ, अभी भी 24/7 मेरे साथ है और हमेशा नहीं हाँ, रहेगी। मेबी नेक्स्ट ईयर, हाँ, और उसके बाद कब तक? राइट? तो हुँ, ठीक है, मतलब इट्स नॉट दैट बैड आल्सो। हुँ, चेरिश इट एज़ लॉन्ग एज़ इट लास्ट्स। हाँ, तो अभी इधा इज़ वेरी कंफर्टेबल घर पे, शी इज़ वेरी हैप्पी कि मम्मी-डैडी के साथ स्कूल है और सब कुछ बहुत अच्छे से है। तो अगर ये पूरी चीज़ को हम देखें Mhm. तो हाउ डिफिकल्ट और ईज़ी हैज़ दिस एंटायर थिंग बीन फॉर यू? Mhm. I won't call it difficult because of the approach of our school, because they don't pressurize you for हुँ, joining classes or for submitting हुँ, assignments or for giving हुँ, टेकिंग हुँ, टेस्ट। तो इस तरीके से इट हैज़ बीन ईज़ी, बट जो मुझे टीचर का भी रोल लेना पड़ता है कई बार कि नहीं, अभी तुम्हें थोड़ा-सा तो हुँ, पढ़ना है। मतलब हुँ, आई डोंट वांट टू प्रेशराइज़ हर, बट ऐसा नहीं होता कि पूरे हफ्ते तुम पढ़ो ही नहीं। बिकॉज़ हुँ, मेरे दिमाग में भी आ जाता है कि या आई एम पेइंग द स्कूल, तो हाँ, कुछ तो करो। तो हाँ, वो रोल भी मुझे लेना हाँ, पड़ रहा है, और अपना हाँ, जो टाइम आई वाज़ होपिंग कि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, वो उल्टा हो गया है। लाइक हुँ, आई हैव टू अकोमोडेट हर एजुकेशन आल्सो इन माय रूटीन नाउ। ज़्यादा एक्टिवली हुँ, मुझे देखना पड़ता है। तो वो एक थोड़ा नेगेटिव भी है। थोड़ा बर्डनसम हो रहा है। हाँ, थोड़ा तो लगता ही है कि ये सब मुझे सिखाना पड़ रहा है। अगर ये स्कूल जा रही होती तो मुझे नहीं सिखाना पड़ता। आई वुडन्ट हैव वरीड अबाउट कि तुम्हें कैसे लिखना है और कैसे लिखना है। हुँ। तो या हाँ, हाँ। नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड क्योंकि इफ स्कूल का एक पर्पस होता है, हुँ, हुँ। वो पर्पस पूरा तरीके से मीट नहीं हो रहा है। वी हैव द करिकुलम इन फ्रंट ऑफ अस कि करवाना क्या है, बट हाँ, करवाना खुद ही है। करवाना सब खुद ही है, और जो ये इतनी सारी चीज़ें, हिंदी, इंग्लिश और नंबर्स, ये 3 चीज़ें जो अपने को, बच्चों को क्लियर करना पड़ता है ना, कि ये मिक्स हुँ। ना करो। जब उसको हिंदी की बुक दिखाओ तो शी विल से कि ये ग्रेप्स है, इंग्लिश की बुक दिखाओ तो शी विल से अंगूर है। तो ये हाँ। इट गेट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि अभी तुम हिंदी पढ़ रही हो तो प्लीज़ हिंदी में बताओ। हाँ, ओहो! तो मतलब अभी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोच पा रही हूँ बिकॉज़ हमने भी कुछ चीज़ें दिविशा को इंग्लिश में सिखाई है। तो लाइक सेब एप्पल है, हुँ। बट ऑरेंज संतरा है। तो तो बच्चे के लिए 2 लैंग्वेजेज़ नहीं, अभी दे दे कैच इट वेरी ईज़िली ऑल्सो। ये भी मैंने देखा है कि अभी उसके लिए बहुत ईज़ी है। हम लोगों ने उसको सिखाया सब इंग्लिश में, बट होता क्या है कि मेरे और मेरे हस्बैंड की आदत है कि हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। तो वो सुन लेती है, हाँ, "अच्छा मम्मा, ये अदरक क्या होता है?" तो आई टोल्ड हर कि ये हाँ, जिंजर होता है। तो नाउ शी ओके, नोज़ बोथ द वर्ड्स। वो अपने ओके। नानू-नानी को समझा भी देती है कि ये जिंजर है, ये अदरक है। मतलब शी नोज़ इट। तो ओह! आई एम लाइक हाँ, ओके। सीख रहे हैं। सीख रहे हैं, हाँ। वो चीज़ हाँ, वही चीज़ कि वो देख-देख के सीखते हैं, तो वो खुद ही अपना दे हाँ, जॉइन द डॉट्स। ईज़ी टू हुँ। टीच देम लैंग्वेजेस एट दिस एज। सो या, दैट्स फाइन। हाँ, आई थिंक हाँ। गुड 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 लर्निंग देयर हुँ। मेरे लिए कि हाँ, ईज़ी अभी जो सिखाना है वो सिखा दो, इट विल स्टे अ लॉन्ग टाइम इन अ लॉन्ग वे। हुँ, हुँ। ओके मैत्री अगर मैं एक और चीज़ पूछूँ बिफोर वी रैप दिस अप हुँ, हुँ। कि अगर हम बात करें कि स्कूल जाके पढ़ाने की हुँ, हुँ। और होम स्कूलिंग की, हुँ, मैं ये अपने लिए पूछ रही हूँ और शायद उन लोगों के लिए भी पूछ रही हूँ जो अपने बच्चों को अभी स्कूल डालने के बारे में सोच रहे हैं। द चिल्ड्रन आर टर्निंग 2 एंड अ हाफ और दे थिंकिंग अभी लेट्स एनरोल द चाइल्ड इनटू अ स्कूल और होम स्कूल द किड। हुँ, What would you, from your experience, suggest? Your learning throughout this, हुँ, experience of हुँ। teaching a child in a pandemic. ओके, सो
पैंडेमिक और नो पैंडेमिक, आई वुड से कि जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको सूट करता है ना, डू दैट। अगर आपको हम्म। लगता है कि यू कैन गिव टाइम टू होम स्कूलिंग, आप सब कुछ कर सकते हो, बिकॉज होम स्कूलिंग इज नॉट ईजी। उसके लिए भी हम्म। यू विल हैव टू फॉलो अ सर्टेन करिकुलम, इफ बिकॉज अनस्कूलिंग इज हम्म। डिफरेंट, होम स्कूलिंग इज डिफरेंट। तो अगर हाँ। आपको लगता है कि आप बच्चे को उतनी अटेंशन दे सकते हो, उतना टाइम दे सकते हो, उतना पेशेंस भी है आपके अंदर, तो डेफिनेटली गो फॉर होम स्कूलिंग और मे बी इवन अनस्कूलिंग। बट अगर आपको हम्म। लगता है कि नहीं, आप इतना नहीं कर सकते हो, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, यू विल गेट बोर्ड, या फिर यू आर जस्ट बिजी, और यू simply don't want to do it, like आपको लगता है कि you want to offload it, you don't want to take another pressure, another burden on yourself, so हाँ। it is better to enroll them in a school, चाहे वो online हो या offline हो, कैसा भी हो, simply enroll them। ज़्यादा इसमें गिल्ट लेने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि होम स्कूलिंग इज ट्रेंडिंग तो मैं होम स्कूलिंग करा दूँ। अपनी हाँ। सिचुएशन के हिसाब से आप देखिए कि what fits you best and just हम्म। go for it, ज़्यादा नहीं सोचने का। Yeah. Thank you, Maitri. Thank you for letting us know about all this experience. And I hope Adhaya abhi और भी enjoy करे अपना time. And when she goes to school, she likes it. And it becomes an easier transition for you. Yeah, I hope so too. Yeah, and Maitri, we are coming to the end of our episode. And before we wrap up and move to the next section, I would like to tell all our listeners. Also, Maitri runs this super fun and chatty podcast called Little Fixes, where she gets all these amazing people on who help you fix your life problems with little fixes here and there. Make sure you give it a listen, and Maitri, tell us how would our listeners contact you if they have a question or they want to connect with you just like that. Okay, so the best way to connect with me is on Instagram, या तो आप मेरा जो पर्सनल ब्लॉग वाला इंस्टाग्राम पेज है, लाइक आई एम अ मॉम ब्लॉगर, या फिर अभी आई कॉल माई सेल्फ अ मोटिवेशनल ब्लॉगर, बिकॉज मॉम से थोड़ा Hmm. आगे बढ़ गए हैं। तो हाँ. यू कैन कनेक्ट विद मी देयर। दैट पेज इज मैथ्रीज कन्फेटी डॉट इधायाज ग्लिटर। द नेम इज अ माउथफुल, बट आई वाज Hmm. फीलिंग इट एट दैट पॉइंट, तो अभी वही चल रहा है, तो आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर जो मेरी पॉडकास्ट का इंस्टाग्राम पेज है, दैट इज एट लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट, वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे पॉडकास्ट पे आई इनवाइट women मोस्टली फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स और सिंपल स्टे एट होम मॉम्स, इट डिपेंड्स कि वो आपके साथ कोई वैल्यू अगर शेयर कर सकते हैं, कोई वैल्यूबल टिप्स, प्रैक्टिकल आइडिया शेयर कर सकते हैं आपकी लाइफ को थोड़ा सा भी बेटर बनाने के लिए, किसी भी एस्पेक्ट को बेटर बनाने के लिए। तो वही चीज़ें हम लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट पे शेयर करते हैं। छोटी चीज़ों से आपकी लाइफ को हम बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, Hmm. आप लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट को किसी भी प्लेटफॉर्म पे भी सुन सकते हैं। डेफिनेटली, और मैं ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो मेक श्योर यू गो देयर एंड गिव इट अ लिसन, सी इफ दिस इंट्रीग्स यू एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब. थैंक यू Maitri once again for coming on board. We have learned so many things from your experience, and I think हमारे listeners भी they understand what to do in a situation when they have to have a child go to a school. Thank you so much, Maitri. Thank you, Divya. It was a pleasure talking to you. Yeah, same here. And we would now move on to our next section, which is the parenting tip. The parenting tip of the episode is to allow children to take time while we try and help them fall in a routine. In the last few episodes, I've talked a lot about the importance of creating routines for children, especially in episode 12 and 5. While I stick to the fact that same and repeated stimulus is really something that makes a child adapt, I also wanted to bring this point that we need to give them time, ample amount of time, while they try and adapt. Time and patience, and a retained faith showcased by a parent in the process of helping them form routines is something that really takes them a long way. Also, when we give them this space and time to fit in new routines, we also, as a byproduct, inculcate tremendous amount of self-confidence. They learn that they can, and that goes a long way. I'll leave you with that thought and say bye bye. Have a great day or a wonderful evening. Make sure you subscribe if you like listening to us. Share if you think it may help someone. And follow me on my Instagram handle at @divya.kapoorofficial for any updates. Take care, you wonderful people, and keep listening.